All of the 8 persons accused for allegedly beating up Delhi Police Constable Subhash Tomar to death at India Gate earlier on 23rd December have been granted bail today by a Delhi court. They are all out on bail, sans one person named Nafiz, who is reported to belong to a poor background and has not been able to provide surety. The 8 persons were charged with attempt to murder, rioting and destruction of public property among other sections of IPC. We were already given bail on Monday. Now, today, because that very day we couldn't produce sureties for all the accused because the whole area was cordoned off. So Honorable Court had graciously allowed that all night we could produce surety today, that is Wednesday. So today we could produce sureties for the leftover 4 accused whose surety could not be produced on that day. And those formalities were completed. One person, Nafiz, could not produce his surety because he's a poor fellow. He has not been able to get hold of somebody who can stand for his surety, maybe because of fear of police. So he's still in the court. He's going to be there till 4 o'clock, and after that, the Honorable Judge will decide his fate. No, what about the plea? What about your basic plea in this particular case? The fact that these people are innocent? Today the trial has not started, but prima facie there is no case made out. Because just saying, if you read the FIR contains an absolutely disconnect. There is a story given, and after that it says that 8 people were picked up. Now, learned judge had clearly asked the police and the IO that out of 5,000, how could you identify these 8? And the police has failed to answer that which one of these 8 is the one who is responsible for pelting the stone, or who might have a connection with the death of the constable who died. So there is no connection at all. How are you so confident about their innocence? That's what I. Because I have spoken to all of these 8. Now each of these 8, they have been picked up from different locations, which is not prima facie connected with the location of the death of the constable. Okay. 2 of the accused were travelling in a metro when the death of Constable Subhash Tomar ji happened. Okay. We have requested Honorable Court, and Honorable Court has already issued notice to DMRC asking to produce the video footage of that day, of that time. Meanwhile, one of the accused remained firm on his stance of being falsely implicated in the matter. उस दिन में दोपहर में 3 बजे के आसपास 2:30-3 बजे हम लोग मॉल में थे, रोहिणी सेक्टर 3 में M2 का आई थिंक कोई है। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ क्रोमा के सर्विस सेंटर में गया था मोबाइल परचेज करने के लिए, मोबाइल स्टोर पर भी मैं गया था, और हरिओम कोई है वहाँ पे, मैं वहाँ भी गया था मॉल में। वहाँ मेरे फुटेज अवेलेबल होंगे। वहाँ से मैंने 3 बजे 3:15 में एक मोबाइल परचेज किया है, जिसके मेरे बिल है ऑलरेडी। मैक्सिमैक्स में सेट परचेज के मैंने और मेरे भाई दोनों साथ में थे। उसके हम लोग अपने घर पर गए रोहिणी में सेक्टर 17 में, वहाँ हमने लंच किया, लैपटॉप अपना रखा। फिर हम लोगों ने मेट्रो ली हम लोगों ने 4:30 बजे के आसपास, राइट टाइम मेरे को याद नहीं है। फिर मेट्रो लेके हम लोग मेट्रो में थे 6 बजे तक, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 6 o'clock तक हम लोग मेट्रो में थे, 5:45 बजे के आसपास मेट्रो में थे। और फिर हम लोग जब बाहर निकले, फिर हम लोग को भगवान दास रोड से पुलिस वाले आए 20-25, उन्होंने बिना आ रहे थे, हम भी चल रहे थे, उन्होंने पकड़ा, लाठियां मारी और हमें पकड़े, थाने में ले आए। वहाँ 2-3 चांटे मारे, फिर हमें बंद कर दिया विदाउट एनी रीजन की। क्या रीजन था क्या था हमें भी नहीं था, क्या रीजन था, हमें क्यों बंद किया गया, ना उन्होंने कुछ हमें बताया। अभी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फुटेज आएंगे तो पता चलेगा आगे क्या होगा। Tomar's family, however, has defied any allusions to a heart attack, saying that the constable was a man in good health and had died as a result of being attacked. जी नहीं, ये सब गलत है कि जो भी हुआ है पब्लिक के बीच में ही हुआ है, पब्लिक की वजह से ही हुआ है। इतना हंगामा था कि चोट लगनी लाजमी थी उन्हें, फिर भी गलती सारी उन प्रदर्शनकारियों की है, और जो कुछ हुआ उनकी वजह से ही हुआ है। Meanwhile, Congress has alleged that the presence of Yog Guru Baba Ramdev, an activist turned politician Arvind Kejriwal, had led to the agitation taking a violent turn. छात्रों के आंदोलन में बाबा रामदेव अरविंद केजरीवाल ने जाकर उसको राजनीतिक स्वरूप दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे होंगे। इन्हीं के बीच के कुछ लोग होंगे जिन्होंने उस आंदोलन को हिंसक स्वरूप दिया, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। Correspondent Sandeep Bol from New Delhi and Kamna Mathur from Lucknow for ANI.